पार्टिसिपेंट को क्लियर करने की पार्टिसिपेंट्स 2 पार्टिसिपेंट्स आ गए। एक तो मैं हूँगा, एक और होगा। हम तो आ लेते हैं पार्टिसिपेंट्स को अटेंडेंस की जाएगी। 3 से 4 आ गए। एडमिट कर रहे हैं फिर वहाँ पर कैमरा एक्सेस मिलेगा, अब हो जाएगा। 4 बच्चे आ गए। आप वीडियो इसको व्यू कर, अच्छा व्यू होगी बस ऐसा ही है बच्चे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। ये आपने सबको एंटर कर दिया? जी सर। नहीं, सबको एंटर नहीं करना भाई, सबको देख सर अब तो हो गया, मैं देख लेता हूँ। अब नेक्स्ट आने वाले जब आप बोलेंगे जब कर। अभी 5 बच्चे हैं, सबसे है जमील अहमद, ये तो आप ही का नाम है। एक है सुंदस, नंबर पता 12842 884 सुंदस, ठीक है। दूसरे सबा 12964 12964 ठीक है, सबा का 4 और है 12971 उसी के नीचे क्या राबिका सिद्दीकी 13200 फिजा चौधरी 13200 फिजा गौरी 12870 मोहम्मद मोइज खान, ठीक है सर। बस अभी यही है 1 2 3 4 5 जी, तो टोटल 6 है। जो भी आने हैं ना इसको आप यहाँ मार्क कर दीजिए। जी सर। बेटा एक गिलास पानी तो ले आओ। इसको मार्क कर दीजिए। जी सर, इससे ज्यादा ही व्यू आ रहा है, इधर से भी ज्यादा है। अच्छा, उधर से भी थोड़ा सा ज्यादा है। अच्छा, और उधर से भी थोड़ा सा ज्यादा ही है, उधर तो इतना ज्यादा सही। अस्सलाम वालेकुम। Students, today we are doing interest. There are 2 types of interest: simple interest and common interest. We are doing the simple interest. Okay. So today we are doing the simple interest. What is simple interest? When we invest some money, when we are investing in a bank, they will give us some profit, fixed profit. That is called the interest. They are giving fixed profit
per year, per semi-year, per month, per quarter, etc. So that profit is called the interest. That profit is called the interest. And what is the simple interest? If every year the profit is given on our investment only, that is called the simple interest. For example, we are investing 1,000 rupees in a bank, and the bank is committed that they will give 10% interest per year. 10% interest per year. So that at the end of first year, they will give 100 rupees as an interest. The next year, they will give 100 rupees, and so on. So that is called the simple interest. So the interest will be given on our initial amount, which is called the present value. The initial amount which are investing in the bank, that is called the initial value or the present value. It is denoted by P naught. Initial value, initial amount. This is also called the present value. What the bank is given, that is called the interest, denoted by capital I. And the rate of interest, for example, they are saying that they will give 10% per year. So that is called the interest rate, denoted by small I. Interest rate in percentage. And T is denoted by time, the duration, it is in years. For how many years we are investing the money? For how many years we are investing the money? That is called the duration and denoted by T. So these are the some terminologies which will be used in the interest. The formula for the simple interest will be I is equal to P naught small I into T. This is the formula for the simple interest. P naught is the amount which is being invested in the bank. I is the rate of interest. T is the time in years. And the future value is denoted by PT. PT is the future value. That means the amount after T years. PT is the future value, amount after T years. So that will be equal to, this is the future value. Future value of the investment. And the formula for the future value will be equal to PT is equal to P naught plus I. This is the future value. PT is equal to P naught plus I. So these two formulas will be used to find the simple interest. This is the one. I is equal to P naught I into T, and PT is equal to P naught plus I.
If we are asked to find the simple interest, we will use only this formula. If we are asked to find the future value, we will use, first we find I, then we will add this I in the original value, the initial value, P naught. So P naught plus I will be the future value or the value of the account after T years. PT is the value of the account after T years, the future value, that is equal to P naught plus I. So formula are very simple for the simple interest. Initial interest is equal to initial value, which is the present value. The amount is invested in the bank, and I is the rate of interest per year in percentage. T is the time in years. So these three things must be known to find the interest. Okay, now we'll do the exercise. Exercise 5.3 on page 199. पूछ रहे जी नहीं देखिएगा सही है तो यहाँ से देखिए सॉरी ये अच्छा हाँ मैं आ गया था हाँ थोड़ा सा ब्लर्ट है कुछ ये शार्प हो सकता है एक काम अगर कर दें क्या वो आके मैं होगा मैं तो गया था इसने खोले ही नहीं लॉक था ऑफिस ब्लैक पेन देख के लाता हूँ हाँ मार्क का जरा अच्छा होगा तो कुछ बेहतर हो जाएगा जी Okay students, we are doing exercise here. I am writing the formula. I is equal to P naught small I into T, and PT is equal to P naught plus I. These two formulae. This is for the interest, this is for the future value. That means the amount after T years. Now we are doing exercise 5.3, page 199. Page 199. Okay. So question number 2. Exercise 5.3, question number 2. A saving account of pound 10,000 earns simple interest at 5% per annum. Saving accounts of सर आपको आवाज आ रही है सर pound earns simple interest at 5% per annum. Calculate the value of the account, that means the future value after 6 years. So it is told earn simple interest. So a saving account of 10,000 pounds. So this is the initial value or the present value. Question number 2. Present value is
10,000 pound. Present value is 10,000 pound. Earn simple interest at 5% per annum. So I is equal to 5% per annum. Per annum means per year. Calculate the value of the account, the future value after 6 years. So after 6 years, we have to find the future value PT after 6 years. We have to find the future value PT. अब बस बेटा जहाँ ये हम हाइब्रिड मोड में वहां से कैंपस से पढ़ा रहे हैं, अब कैंपस में तो यही है, तो घर पे जो हम ले रहे थे वो बेहतर था मेरे हिसाब से, तो मेरे ख्याल में वो हमारे अपने कंट्रोल में हर चीज होती है, लिमिटेड स्पेस है, यहाँ नहीं मिला तो बच्चों को तो पहले समझ ही नहीं आ रहा है। आप उनको बोले वो लिखते हैं, आपके पास मोबाइल है सर? मोबाइल तो है, आप जब पूरा स्लाइड लिख लेंगे ना, हाँ। मैं उसकी पिक्चर लेके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा बच्चों को। अच्छा, तो थोड़ा वो सीखते भी जाए, साथ साथ में उनको तस्वीर भी देखा दूंगा। सही। आप मोबाइल में दे दीजिएगा। पूरा कंप्लीट हो जाए, मैं जब मिटाने से पहले फिर वो कर लेना। सर आगे वाली लाइट ऑफ कर दें। First of all, we'll find the interest, because without interest we can't find PT. We can't find the future value without interest. So first we find the interest. The formula for the interest is P naught I into T. P naught is 10,000. I is 5%. 5% means 5 upon 100. Into T. T is 6. Calculate this. आगे वाली लाइट ऑफ कर दें। 6 5 are 30. So 3,000. The interest is 3,000 pound. And the future value PT will be equal to P naught, that was 10,000, plus I is 3,000. It is 13,000. This is the future value after 6 years. So first of all, we'll find that I, the interest, simple interest. That is P naught, 10,000 into I is 5%, 5 upon 100 into T. T is 6 years into 6. So 2 zeros are cancelled by 2 zeros. 6 into 5 will be 30. 30 into 100 will be 3000. That means 3,000. So PT will become 10,000 plus 3,000 will be 13,000. So that was question number 2 of exercise 5.3. तो ये मैं आपको साथ साथ बता भी रहा हूं, तो इसलिए आप सुनते भी रहे ना साथ साथ। अगर नजर नहीं आ रहा तो कान खुले रखें, कान से सुनते रहें, आप बाल देखते हैं क्या किया जा सकता है। फीडबैक तो वो दे रहे होंगे यहाँ, वो आ रहा होगा, उसमें भी दिखा है, इसमें भी दे रहे होंगे। तो किसी से तो मुझे पता चल रहा, उन्होंने कहा कि समझ ही नहीं आ रहा, नजर ही नहीं आ रहा। लाइट ऑफ कर दी। बिल्कुल ही नजर नहीं आएगा। नहीं बिल्कुल ही नजर नहीं आएगा भाई। लाइट ऑफ करने से बिल्कुल ही नजर नहीं आएगा।
अच्छा यहाँ इसमें वो एक आता चैट, चैट भी खुला हुआ है। लाइट ऑफ कर देंगे सर। चैट में देखो आगे वाली चैट में कोई कुछ सर स्क्रीन ब्लर है सर, सब ब्लर है। हाँ सब ब्लर है, यही कह रहे हैं। और लाइट ऑफ कर देंगे। नहीं, लाइट ऑफ करने से बिल्कुल ही अंधेरा हो जाएगा। इनको लिख दूं मैं? हाँ लिख दे बोल दिया वैसे तो। लिख दे। स्टूडेंट्स लाइट ऑफ करने से बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा रूम में। ये बोर्ड सर एक बार ट्राई करिए, क्या पता सही नजर आए फिर। थोड़ा है, ये उसकी स्क्रीन थोड़ा है लैपटॉप की या कोई का वो जो रोशन है स्क्रीन, ये तो बोर्ड रोशन ही लाइट की वजह से, लाइट बोर्ड बंद हो गई तो बोर्ड ही खत्म हो जाएगा। बोर्ड की अपनी लाइट थोड़ा है बेटा जो एक्स्ट्रा लाइट बंद कर दी जाए। ओके बहरहाल ये हम आपको तस्वीर भेज देंगे, इसकी तस्वीर भेज दें, फिर मैं इसको बताता हूं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसमें। ये मैंने आपको पिक्चर भेज दी है। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। अब अभी हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट की थी क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहे हैं, calculate the present value of 6,000 pound that is expected to be received in 3 years। तो ये 3 साल में हमें रिसीव होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4, PT 6,000 that is to be expected in 3 years, so T is 3 years। with simple interest of 7.5% per annum। I is 7.5% per annum। Per annum means annually, per year। So we have to find the present value, P naught, यानी 3 साल पहले ये कितने थे। अब ये फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। PT इज इक्वल टू P नॉट प्लस I को रिप्लेस करेंगे हम इससे, P नॉट प्लस IT से, बट I इज इक्वल टू P नॉट प्लस IT। P नॉट IT, therefore PT is equal to P नॉट प्लस I की जगह हम P नॉट IT लिख देंगे। Now P naught is common, it is PT, P naught is common, inside is 1 plus IT। P naught कॉमन आ गया, यहां से P naught कॉमन हुआ 1 आया, यहां से P naught कॉमन आया तो IT बच गया।
now we will substitute the values. P naught is 6000. PT is 6000. P naught is unknown. We have to find. So P naught will be P naught into 1 plus I. I is 7.5%. 7.5 upon 100 into T. T is 3 years. 6000 is equal to P naught into 1 plus 7.5 upon 100 into T. So 6000 is equal to P naught. इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 plus 7.5 into 3 will be 22.5. 22.5 upon 100 will be 0.225. ये कैलकुलेटर से आपने करना है भाई. 7.5 upon 100 into 3 करेंगे तो you will get 0.225. So 1 plus 0.225, it will become 1 plus 0.225 will be 1.225. अब 6000 को हम 1.225 से डिवाइड कर देंगे, so we will get P naught. जिस तरफ आ जाएगा 1.225 is being multiplied by P naught. When it is shifted on the other side, it will divide 6000. 1.225. Use your calculator. Calculate it. The answer is 4897.959. The answer is 4897.959 means 96. We will write the answer up to 2 decimal place. We will write the answer up to 2 decimal place. So this is the present value 4896.97.96. This is the present value. इसमें नाम हो तो उसको नाम और नंबर हो तो कीजिएगा, वही नाम और वही नंबर ना हो तो मत कीजिएगा, रिमूव कर दो. So this is the answer. P naught is equal to 4897.96 pounds sterling. सर व्हाट्सएप पे ग्रुप सेंड करो जी, इसका ग्रुप है ना व्हाट्सएप जी, व्हाट्सएप इस तरह कर JAMIL अच्छा हाँ. तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था.
यार काइंडली इसकी पिक्चर सेंड कर दोगे यार ग्रुप पे। Question number 5. How much is the sum of 3,500 pound worth at the end of 5 years if deposited at 11% simple interest? Question number 5. How much a sum of 3,500 pound worth? So P naught 3,500 pounds at the end of 5 years. T is equal to 5 years. Deposited at 11% simple interest. Per annum. How much is the sum? So we have to find PT. So for PT, first of all, we find I. I will be equal to P naught 3,500 into I 11%, 11 upon 100 into T. T is 5 years. I is equal to 3,500 into 11 upon 100 into 5. 2 zeros are cancelled by 2 zeros. So 35 into 11 into 5. What will be the answer? $35 into 11 into 5. जी क्या आंसर होगा, कोई आप भी बता दें। 35 into 11 into 5. जी कोई बता रहा है? मेयर मोहसिन, आपको तस्वीर सेंड कर दी गई है, व्हाट्सएप चेक करें प्लीज। सर 1925 रबीका ने जवाब दिया। दिया क्या दिया? 1925। 1925. यस सर, रबीका सिटी। So I is equal to 1925 pounds. This is the interest. So PT will be equal to PT is equal to P naught 3,500 plus interest I 1,925. So the answer will be equal to 5245 pounds. 5,425 pounds is the answer.
The answer is 5,425 pounds is the answer. So that was the question of the simple interest. In the B part of the same question, in the B part of the same question, it is asked, B part, 11% compound interest. So that is also, this is the compound interest. So what is the compound interest? So that is the simple interest which I told you. Now the second is the compound interest. What is the compound interest? Compound interest is a interest which is charged or which is given on the interest as well. For example, you are investing 100 rupees at the rate of 10% per annum compounded annually. So after 1 year, they will give you 10 rupees 10 as an interest. So you have the total amount will you have 100 plus 10. It will become 110. So next year they will give you the interest on 110, not only 100. They will give the interest on the initial amount, the present value, as well as on the interest. So that was total become PT will become 110. So next year you will get the interest on 110. And at the end of the second year, that will also be accumulated with the 110. Now the third year you will get the interest on both the values. So that is called the compound interest. So you are getting the interest on the not only the initial value, the present value, but on the interest as well. So that is called the compound interest. So for the compound interest, we have separate formula. For the compound interest, we have some different formulae. So here I am writing the formula for the compound interest. In compound interest, directly we are not finding the interest. We are finding the future value. In simple interest, we are finding directly the interest, but in compound interest, we are finding the future value. The formula for that one is, for the compound interest, this is the formula for the compound interest, PT is equal to P naught into 1 plus I whole raised to power T. This is the formula for the compound interest. For the future value of the compound interest, PT is equal to P naught into 1 plus I whole raised to power T. So this is the formula for the future value of compound interest. So we are doing the B part. B part for the compound interest. Compounded annually. The same amount
3,500, time is the same, 5 years, rate is the same.